हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक हंटर्स। आज का डेट है 4 अगस्त और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। बैंक निफ्टी का जैसे मैंने कल आप लोग को बोला था, कल मैंने रेंज मार्क करके दी थी एक, ये रेंज में मार्केट मूव करेगा, वही हुआ। द मार्केट ओपन समवेयर अबाउट, लेट मी जस्ट मार्क द ओपनिंग। The market had opened right about over here at our resistance where I had marked the previous day, where we knew that we would take resistance. So if you saw yesterday's video, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने ये रेंज मेंशन किया था यहाँ पे, और वो सेम रेंज टॉप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, कुछ डबल टॉप की तरह बनाया था मार्केट ने। मैं आपको कल ही कह रहा था कि मार्केट स्लगिश हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मार्केट स्लगिश होता गया एंड फाइनली आ गया है साइडवेज फेज में। How do you understand when the market is becoming sluggish is when you can see how the price action starts to move. If the market was proper bullish, we should have followed this trend line to continue moving upwards. जैसे हम देख सकते हैं, हमको ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस बार बार बाउंस करता, अगर मार्केट बुलिश होता है ऐसा 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 करके मार्केट ऊपर मूव करता, पर हमको समझ में आ गया कि मार्केट स्लगिश हो रहा है, स्लो हो रहा है मार्केट, क्योंकि हम एक कर्व देख रहे थे और कर्व के बाद हम साइडवेज देख रहे थे और ये डाउन मूव आ गया। तो अभी हमको पता चल रहा है कि मार्केट रिट्रेस ज़रूर लेगा एक। आई एम वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट टू कम इन द मार्केट, currently waiting for bank nifty to retrace. As you can see, it's still rejected from the range low, so we can say we are finding some level of resistance from here. ये लेवल से कुछ रेसिस्टेंस मिल रहा है, कल हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे मूव करे, ये लेवल तक आ जाए 36,700 तक। यहाँ पे शायद हमको हमारा रीटेस्ट मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमको एक रीटेस्ट मिले ताकि मार्केट कैन प्रोसीड इट्स अप मूव। एक मिनट में ये सब क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स, ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, तो कुछ ऐसा हमको मूव चाहिए इसका, सम मूव लाइक दिस। एक मूव ऐसा लेके एक पुल बैक एक आएगा और फिर मार्केट ऊपर मूव करे तो अच्छा रहेगा, मार्केट हेल्दी हो जाएगा। अगर एक पुल बैक आ गया तो द मार्केट विल स्टार्ट बिकमिंग हेल्दी वंस वी गेट अ गुड पुल बैक ऑन इट। I am personally waiting for the pullback. This you can see is like a resistance. This was a resistance and we broke out. This also is one of the important levels that I had marked over here. This was first a support, broke down, resistance, and now we broke out, but we did not retest this level. That retest is very important, so I feel we can move to this level and then proceed moving up. This is the analysis for Bank Nifty. If you ask me tomorrow's price action, I could say we would get a move down, highly possible that we get a move down depending on the news tomorrow. There is a policy news tomorrow, I guess it had been postponed by the RBI, but if you draw a trend line from year to year, you can see how the market is just moving on the support of this one trend line. Bounces are becoming shorter, you can see maybe we move down like this. Today's expiry was very confusing. We saw good moves in today's expiry, especially this fall. If you would have seen yesterday's video, you should have understood that this is the resistance. This one candle gives us clarity that we have to short the market because it's a bear hammer with a good rejection. It took out the liquidity from top. It took out stop losses right over here in this range. स्टॉप लॉस निकाल दिया था मार्केट ने और फिर प्रॉपर डाउन मूव मिला था हमको। वी गॉट अबाउट, यू कुड से फ्रॉम द रेंज हाई वी गॉट गुड 880 पॉइंट्स ड्रॉप. दैट वाज अ वेरी गुड ड्रॉप, दैट वाज अ गुड करेक्शन. मैनी पीपल हैड गॉट ट्रैप्ड ओवर हियर इन द स्टार्टिंग 5 minutes because the market showed good moves over there. That's it for Bank Nifty. Just stay safe tomorrow if it's possible. Do not trade tomorrow because today's expiry was very good. Many put options skyrocketed, giving more than 7x 8x returns. So if you made a good profit today, just avoid tomorrow. Go out for lunch, have a good day, enjoy time with family, take a break in it. Now we'll move ahead to Nifty. As you would have seen yesterday's video, I had marked this one very important support from where the price has been bouncing, and today also we saw a good bounce over here. This price range was held. That is still positive for Nifty. Nifty looks better compared to Bank Nifty because, as I told, we haven't been able to break any of these lows. We just had a wick down low over here, but we couldn't close below this support.
निफ्टी ये सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, पर जब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेसिस्टेंस निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है अभी। ये रेसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और अगर कल बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वापस ये सपोर्ट पे कोई एक्शन मिल सकता है हमको, शायद कंसोलिडेशन और फिर एक डाउन मूव मिले। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल थोड़ा काम डे रहेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी काफ़ी अच्छी थी। इफ़ वी ओपन अ गैप अप आई विल प्रॉब्ली सी दिस पॉइंट, I'll make this entire range, you could say this is one range where I would wait and not trade. You could call this a fake out, you can call this head and shoulders also. Many people, बहुत लोग इसको head and shoulders बुला रहे हैं। कल मार्केट नीचे मूव करेगा, ब्रेकडाउन लेके कुछ ऐसा मूव करेगा मार्केट हेड एंड शोल्डर्स बना के। हाई पॉसिबिलिटी है कि कल हेड एंड शोल्डर्स बना के हम नीचे मूव करें, पर हाँ सेफ़ रहिए। आई होप कॉल ऑप्शन किसने कैरी नहीं किया है, अभी ऑप्शंस कैरी करना सेफ़ नहीं है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, ये मैं चैनल में भी अपडेट करता रहता हूँ। जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दोज हु हैवंट जॉइन द चैनल कैन जॉइन इट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। There are several views posted on the channel, many admins give their point of view. The chat room is filled with many traders, many experienced traders, and many people who share their ideas. It would be a good learning source for everyone to be there. Next stock that was requested to analyze for today was ZYDUS Life Sciences. ZYDUS Life Sciences, मैंने थोड़ा इसका analysis किया था. I've done tad bit analysis and we can clearly see that the market is now reducing its downward momentum. We are now moving sideways from a very long time with a good candle today. This candle gives a lot of confidence. So if we break out of this, I guess there should be good up move. If you have the risk momentum, if you have the risk bearing capacity, I guess you can take a long over here. You can take this risk with your SL to be somewhere over here below today's low and your target over here. You get a good trade of about 4 risk to reward. You can even tighten the SL by going on lower time frames like I just went. This is how I select my SL. Like the SL below 4 hour low would make it a 6 risk reward ratio, 6.67 to be precise. But yes, if it's in your risk bearing capacity, I guess you can take this trade. अच्छा लगता है ये ट्रेड, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए इसके लिए, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यहीं कहीं वीकली रेसिस्टेंस आ जाता है। एक अच्छा अप मूव मिल सकता है, पुल बैक की तरह मिल सकता है। Not to forget that the market structure for this is still bullish. Market's been moving in upward waves, and we can also see another wave up, breaking the all-time high. But that will take very long term. I'm saying a year or a two. But yeah, ZYDUS Life Sciences does look good to take. Next stock that was requested was Rain Industries. Rain Industries on the weekly looks very good. काफ़ी अच्छा लग रहा है Rain Industries. ये एक particular level है जो मैं देख रहा हूँ, because the market structure on weekly is bearish for now. It's moving in downward waves. This could be just another short covering and the market moves down. But once if we have a close above this candle, we could do something like this, make a move up and then keep continuing up. I would say wait for a weekly close above 203 rupees. Weekly close के लिए wait कीजिए 203 रुपए के ऊपर और फिर अपना हाथ डालिए इस स्टॉक में। मैक्स हेल्थ ये एक स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा लग रहा है। मैं आपको बस वापस कर लेता हूँ ये लोड। मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ अभी, थोड़ा इशू है। घर रेनोवेट हो रहा है मेरा, जैसे मैं आपको कह रहा था, तो थोड़ा मैं उसमें बिज़ी हूँ। मैं एक्चुअली बाहर बैठा हूँ कहीं पे अभी। But yes, okay, let's get back to the content. As you can see, after a long move up, Max Health has been moving like this. You could call it a bull flag or a bull pennant or a bull consolidation. But overall, this looks very bullish to me. This particular bounce looks like it's going to sustain. So risk traders can take a long ride from here, targeting right these highs, 490 around levels with your stop loss just below the weekly low. Guess gives us a good risk reward ratio of about 6.52. So yeah, Max Health does look good for a buy, but wait for BankNifty and Nifty to correct. After the correction happens, you can look at these 3 stocks. You can have a view on these 3 stocks. ये 3 stocks अच्छे लग रहे हैं, तीनों के पिक्स आज अच्छे थे।
और ये जो 2 स्टॉक है ज़ाइडस लाइफ और रेन इंडस्ट्रीज़, ये मैंने खुद के मन से नहीं लिए हैं, ये चैट बॉक्स में दिया गया था। जो भी स्टॉक चैट बॉक्स में मांगा जाता है मैं उसका एनालिसिस करता हूँ अपने वीडियो में और वही डालता हूँ। चैट बॉक्स पे हेल्प भी होती रहती है, कोई स्टॉक मांगता है तो उसका एनालिसिस कोई ना कोई एडमिन तो दे देता है, सपोर्ट रहता है चैट बॉक्स में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि द चैनल इज़ ऑल फॉर फ्री। चैनल पे कोई प्रीमियम नहीं है, सारा कंटेंट, डेटा, सब कुछ जो दिया जाता है बाहर लर्निंग पर्पस के लिए है। चैनल अभी के लिए फ्री है और देखते हैं कब तक के लिए फ्री रहेगा। तो yes, those who haven't joined the channel, they can join by clicking the link in the bio. Stay safe for tomorrow. मैं वापस वही बोलूँगा, manage your risks. Please play safe with your capital. Do not lose your capital in the process of making more money or recovering your losses. That's it for today's video. I hope you guys are very clear with what I see for Bank Nifty and Nifty tomorrow. I'll see you guys in the next video, that is tomorrow, with a weekly update and a daily update of what will happen tomorrow. Thank you so much for watching the video. I'll meet you guys tomorrow. Take care.